to leave. Already packing, come with me. I'm not really asking. We'll get away to a place where we don't know. आपका नाम क्या है सर? नवांग सर, नवांग। नवांग इन तवांग। नवांग, हमारे पास पास वगैरह सब है ना? जी सर। हमारे पास कितना टाइम लगता है? सर 1.5 घंटा 2 घंटा लगता है सर। 2 घंटा लगेगा। जी सर। वो वाई जंक्शन जल्दी आ जाता होगा ना? जी, वाई जंक्शन का समिस्टर लेक अलग रूट है। वो लेक आपका 11 किलोमीटर लगभग है वाई जंक्शन से। पीटीएसओ लेक आपको रास्ता में मिल जाएगा। आप पीटीएसओ को क्या बोलते हो? पंगाटेंग छो। वापस बोलो। पंगाटेंग। अरे बाप रे, इसका मतलब क्या होता है? कुछ पंगाटेंग छो मीन्स ये छो मीन्स हम लोग का लेक है सर। तो आप जब भी तवांग पहुंचो अपने होटल वालों से बात करके बुमला का पास ले लेना, अदरवाइज सिर्फ माधुरी लेक हो पाएगा और बुमला रह जाएगा। वेदर कंडीशन प्लेज अ वेरी क्रूशियल रोल इन सच एरिया, तो अगर मौसम अच्छा नहीं हुआ तो आप बुमला नहीं जा पाओगे। तो बेटर यही है जिस दिन आप तवांग पहुंचो सबसे पहले बुमला का प्लान करना, सो दैट अगर उस दिन मौसम अच्छा नहीं हुआ तो आप उस दिन तवांग करके नेक्स्ट डे बुमला कवर कर सकते हो। I'm done living life with the lights out, die with my own doubts. Be free with me. बुमला पास 15,200 फीट के हाई एल्टीट्यूड पर है और ये पास तिब्बत, इंडिया और चाइना की बॉर्डर्स को कनेक्ट करता है। इसी पास को अग्री किया गया है एज अ बॉर्डर मीटिंग पर्सनल पॉइंट आफ्टर इंडो चाइना वॉर इन 1962। A classic cliche. We're on the एंड आई वॉज ऑल्सो इन्फॉर्म्ड कि इसी पास के थ्रू इंडिया और तिब्बत के सारे ट्रेडिंग्स होते हैं। And there comes a cafe. Cafe on the way to Bumla. Love the sit out area. done living life with the lights out, die with my own doubts. Be free with me. Be free. Be free with me. Be free. So finally made it to Bumla Pass and एंट्री होने के बाद में दिस इज़ द लास्ट पॉइंट जहाँ पर यू कैन गेट पिक्चर्स क्लिक्ड और वीडियो क्लिक्ड। आफ्टर दिस द आर्मी गाइस आपको लेके जाएंगे एंड इट्स गोइंग टू बी अ नो फोटो जोन, नो वीडियो जोन, रिस्पेक्ट दैट। सो वाइल इन बुमला पास यू कैन नॉट गो विथ अपने कैमरे के साथ में, बट द प्लेस इज़ वर्थ विजिटिंग। आपको पता चलता है कि आप जब आराम से एसी में बैठे होते हो कितने लोग आपके लिए सेक्रीफाइस कर रहे हैं। हेड्स ऑफ टू देम। जय हिंद। बुमला पास में सोल्जर्स आपको 10 मिनट का ब्रीफ देते हैं कि कहाँ पर कौन सा बंकर है, कैसे बंकर में शिफ्ट एक्सचेंज होती है, कहाँ मीटिंग पॉइंट है एंड फ्यू मोर डिटेल्स। यह एक अलग ही एक्सपीरियंस है जो शब्दों में बयां करना मुश्किल है। पिक्चर्स या वीडियो तो क्लिक करना अलाउ नहीं है, तो आई कुडंट टेक मच वीडियोस, बट आई एम लीविंग मोर डिटेल्स इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो। इन केस यू वांट टू नो मोर अबाउट इट, डोंट फॉरगेट टू रीड दैट। और वहां से निकलकर वी हेडेड टुवर्ड्स माधुरी लेक। हम जा रहे हैं माधुरी लेक। क्या नाम था इसका माधुरी लेक का दूसरा? समिस्टर लेक। This place is probably one of the most beautiful place I have visited in Arunachal. लेक पहुंचने से पहले ही आपको इतना खूबसूरत रास्ता दिखता है that you get mesmerized. और ये लेक इसलिए भी बहुत फेमस है क्योंकि बहुत सुंदर नज़ारे
और स्नो के अलावा यू कैन सी पाइन ट्रीज एवरीवेयर। अब इस लेक का नाम तो संगेश्वर लेक है, लेकिन कोयला मूवी में माधुरी और शाहरुख के डांस के बाद में इसको माधुरी लेक बोलते हैं। इट्स अ नो ड्रोन जोन, पर ड्रोन शॉट तो बनता है, ठीक है कोई ना। I did mention in my previous video very briefly about these prayer flags. इन 5 कलर के फ्लैग्स को एक रीज़न की वजह से साथ में लगाया जाता है। These all colors depicts the different earthy elements. जो ब्लू होता है वो डिपिक्ट करता है स्काई और स्पेस को, वाइट करता है एयर एंड विंड को, रेड रिप्रेजेंट्स फायर, ग्रीन सिंबलाइज वाटर एंड येलो सिंबलाइजेस अर्थ, एंड टुगेदर दे रिप्रेजेंट द यूनिटी ऑफ ऑल द एलिमेंट्स। आई ट्राइड टू गो थोड़ा और आगे टू गेट अ बेटर व्यू, बट लिटरली लग गई, मतलब दलदल था और पता नहीं चला और सारे जूतों की हालत ख़राब हो गई। अब इन प्रेयर फ्लैग्स में जो प्रेयर लिखी होती है, those prayers are not written to God, but this means to be spread through wind to promote peace, compassion, strength and wisdom. And I could get the saviors at the army canteen situated right beside the lake, जहाँ पर गर्म पानी मिल गया मेरे शूज़ को साफ़ करने के लिए। अब अगर जूते गीले हैं एंड यू आर ऑन द स्नो, तो बेयर फिट इन द स्नो शॉट तो बनना ही था। ऑन द वे बैक मौसम और भी अमेजिंग हो चुका था एंड द व्यूज़ और भी अच्छे हो चुके थे। Can you see the layers and layers of the clouds there? This looks fairy tale है जी। थैंक्स फॉर स्टेइंग विथ मी सो फार। अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया हो देन क्लिक ऑन लाइक एंड सब्सक्राइब बटन एंड ऑल्सो प्रेस ऑन बेल आइकन फॉर नोटिफिकेशन सो दैट यू विल नॉट मिस एनी ऑफ माई अपकमिंग वीडियोज़। Please do let me know your views on this video in the comment section. I'll be coming back next week with a new destination. Till then, stay safe, stay healthy. फिर मिलेंगे। Be there with me till the end of this video and I'll show you top 5 places to visit in Shillong. That's the double decker, guys. That's the lower floor and that is the upper one. And now we will leave for Rainbow Waterfalls, which is about 1 hour from here. This place looks just wow. ये जगह मिस मत करना।